So students, now we'll take this case of magnetic force on current carrying wire, lecture 2. In initial class, I have given the basics, how the magnetic force on the moving charge का collection ही क्या है, magnetic force on current carrying wire, because in current carrying wire there are large number of free electrons which are moving, उनका net force ही ideal formation में आ जाता है for dq charges, correct. And the same thing I will go further in detail. This magnetic force F magnetic, correct, on current carrying wire, current carrying wire. बेसिक चीजें मैंने बता दी थी, बट स्टिल समवेयर सम केसेस ऑफ इंटरेस्ट अगेन हैपन, उसको हम लोग देखते हैं. सपोज आई सी दिस इज अ वायर कैरिंग करंट आई and in the vicinity of it there is a rod. See, it is carrying current I1 and here it is carrying current I2. Rod is having length L and one end of the rod is at a distance D. Say this wire is given the name PQ rod. Rod is given the name PQ, length L. I have to find the force of interaction between this infinite long wire and this rod. What I have to do? कैसे हम लोग इसको देखेंगे, उसको हम वन बाई वन चेक कर सकते हैं. ठीक है जी. हाउ विल सी दिस? आप देखें, आई विल टेक सम एलिमेंट dx हियर. आई विल टेक सम एलिमेंट dx हियर ऑन द वायर, और इस dx एलिमेंट ऑफ वायर की डिस्टेंस आई विल टेक इट x. व्हाई सो? बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस इनफाइनाइट लॉन्ग वायर हियर विल नॉट रिमेन कांस्टेंट विद x. हम फील्ड किसी लेंगे? इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की. हियर द फील्ड इज b1. as a function of x I can write for b1 as a function of x, if I have to write, it will be mu naught by 2 pi this I1 by x. This is the value of field due to this infinite long wire. Field की value ये आ जाएगी. Field is varying with x, so in the dx length if I have to see the force, df force, the df force I will write, just see, I2 dx length cross b1 this value, and I have to integrate. ये integrate करूंगा तो I will get the result. Just see, I2 is the current in this arrangement, यहाँ का dx length and field b1. Now if I write, so what the result will happen? Just see, df will be mu naught over 2 pi I1 upon x into I2 into dx, and this integration we can do. So this will be the force on the wire PQ. Force on the wire PQ, what I will write? Mu1 mu naught I1 I2 by 2 pi integration of dx by x. Correct. Now x length I will vary from the end P to end Q. From P to Q end I will take. So what I will see? This force on the wire PQ, if I go, so this will be what? Mu naught over 2 pi, it is I1 I2, the value is ln x, and I will put the limit. What the limit I will get? First end it is d from the infinite long wire, other end it is d plus l. The value will go from d to d plus l. This thing we can do. Further, what can I say? This f on the wire PQ, if I go like this, it is mu naught over 2 pi I1 I2 ln x log a minus log b. It will be ln log d plus l upon log d. It is ln d plus l upon d. This thing we have. So this force will act on the rod PQ. On the PQ rod, this force will be acting. Correct. इस फोर्स का रिजल्ट हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं. एंड दिस फोर्स इफ आई सी, इवन फोर्स का मैग्नीट्यूड भी आप देखना चाहते हो, तो व्हाट यू विल फाइंड, दिस फोर्स विल बी मैक्सिमम हियर एट दिस एंड. यहाँ फोर्स Fp जो होगा फोर्स, एंड देयर इज अदर फोर्स एट Fq. You will find Fp force is greater than Fq. Why so? Because here the magnetic field is stronger due to I1, B1 field is stronger here, and here the field B1 will be lesser in magnitude. So this rod will have the tendency for more force like this.
तो पहली बात हमारा फोर्स का रिजल्ट ये आ गया. This thing we can see mathematically I have done. Correct. But the value of force it will vary in magnitude throughout. हर जगह पे इसका लेंथ का फोर्स पे लेंथ वाइज फोर्स will go on decreasing. So what could be the nature of motion of this rod if the infinite long wire is fixed? That pattern also we can see. If I have to go like that कि यहाँ पे क्या उसका nature of motion होगा तो वो भी मैं दिखा सकता हूँ. Just see. Say this infinite long wire carrying current I1. आप देखा यहाँ पे this carrying current I1 and this rod was PQ. In this rod PQ, there the force will be more and here the force is less. The tendency of motion is fast here compared to this. So this rod will rotate. से आप देखा करंट ऐसे था फर्दर इट विल रोटेट लाइक दिस. ऐसा रोटेशन ले लेगा. इसका एंड का मोशन कम होगा, इस एंड का मोशन, इसका एंड का मोशन ज्यादा होगा पी पॉइंट पे एंड क्यू विल बी लेस. फाइनली व्हाट विल हैपन, दिस रॉड विल गो लाइक दिस एंड पी एंड विल गो अप. P end will go up and Q end will come down. The rod will get anti-parallel. From here to this position, say it is a position A to this position B, if it is going here, it is combination of rotation and translation. But once it gets anti-parallel, then it will be repelled. If you see here, the field due to I1, B1 is inside. B1 field will be inside. IDL cross B1, the force, if you see the force on the rod, the force here will be repulsive. So this force on the wire element PQ, it will repel. आप देखें B1 की फील्ड की वैल्यू कहाँ जाएगी? It is inside. B1 is inside. IDL cross B. Force on the segment PQ will be repulsion. It will be repelled for linear motion. For linear motion. So here I have discussed the case even when field is varying. Here field was varying along this direction. B की वैल्यू क्या कर रही थी? डिक्रीज कर रही थी. B1 was decreasing. Force field was not remaining constant. Even then we can see the variable force के केस में ये रिजल्ट हम लोग देख सकते हैं. It is one of the case where field is not remaining constant. ये हमने देखा. Correct. Further, some more case of interest we can see. Suppose I say somewhere the circular loop, maybe some semicircular arrangement is given this way. थोड़ा ध्यान देंगे आप. ये वायर, this is the end P, this is the end Q, and this wire is of radius R. It is semicircular. This semicircular loop PQ is here and radius is R. Correct. अब ये वैल्यू ऐसे आ रही है and suppose I say the field. If I have to go for the field and field, some external field is like this. Some field is in this direction. If you see, कोई फील्ड आप मान लीजिए इधर जा रही है. दिस इज द फील्ड वैल्यू. B is external. Current here is I1, but field is B2 is external like this. What could be the force on the wire PQ? Force on the wire PQ, if I have to schematic force. What you will see, this arrangement is semicircular. The displacement of the wire is along x-axis and B2 is this. तो आप देखें current is I1 2R. I1 to R is in this direction. I1 into 2R length is in this direction. A magnetic field B2 is also in the same direction. What is angle theta between them? Theta is 0 degree. I1 2R length into B2 into sine 0 degree. So what you will find? The force here will be 0. This magnetic force will be 0. Why so? Because see, the effective length of the wire displacement is along x-axis and magnetic field is also along x-axis. So angle theta is equal to 0 degree between displacement I1 2R vector and B2. For this arrangement, the force value will be 0. आपको theta angle is also important to see the effects. कैसे हम लोग रिजल्ट देख पा रहे हैं. In some of the elements also we could have done ideal से, लेकिन हम ये चीज फाइनली बना सकते हैं. Correct. It is also one of the related case for magnetic field on current carrying wire semicircular loop. Next I take a case
somewhere. If I say there is this arrangement and say this is the U-shaped figure, infinite long wire, and it's making the current flow like this. See, current is flowing and this is the sliding rod here happened. This sliding rod can move. Just see. So I can say this arrangement, suppose it has some resistance R, battery has the voltage V, and length of the arrangement rod is this, and mass of the rod is M. Correct? It is like this. So you can see from this arrangement and this rod, what will happen? Current will flow like this. Current in the loop. If I take this loop, sliding loop, so this current is flowing upward along y-axis, I can see. Correct? And if for the given arrangement, I might have some external field, magnetic field. Some external magnetic field is this. Just see. Some external magnetic field is arranged external. It is B2, not due to this current flowing in the battery and this rod arrangement. No, it's not due to current I. This field is external. And if this rod is given velocity V0, rod is initially given velocity V0, it can be asked what is the velocity of rod as a function of time t. Or even when we are going for the velocity force, what I will see? Ideal current element, ideal cross B, force is in the backward direction. So this batting force on the rod will be leftward, opposite to velocity. Correct? So this force, if I have to write, what it will be? Just see, it is I into length L in this direction, cross B. B is downward, force is here into B2. This is the force. On angle theta, you see it is 90 degree between them. So this is the force. Force upon mass, if I go, it will give the acceleration. Acceleration happened on the arrangement. If I go like this, so this acceleration E will be force upon mass. So it will be I L B2 by M. And you see this factor I L B2 M, all are constant. So this force is constant. Acceleration is also constant. Force and acceleration, if they are constant, what will happen? This acceleration is opposing the velocity. You can write the velocity of the rod as a function of time t. It can be asked, what is the velocity of rod as a function of time t? What I will write? V is equal to V0 minus A into t. And A value is this. I will say that velocity of rod, it is V0 minus, it is just see I L B2 by M into t. ना? तो ये रिजल्ट हम लोग देख सकते हैं. This result we can see velocity of rod as a function of time t. This thing we can do. Correct? तो एक आइडिया अप्रोच हमको यहाँ पे बना लेना है. कैसे मैग्नेटिक फील्ड एंड फोर्स हाउ दे आर रिलेटेड. ठीक है ना? ये चीज चेक करिएगा. How I am writing this thing for the velocity. If I can say at what distance covered before the rod comes to rest. ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा बिफोर इट कमिंग टू रेस्ट, ये भी हम लोग निकाल सकते. क्या कर सकते थे? फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस V0 स्क्वायर माइनस 2AS. दिस थिंग आई कैन डू. S विल बी V0 का स्क्वायर बाई 2A. एट व्हाट डिस्टेंस covered before rod comes to rest, that value also I can derive. The distance covered by the rod before coming to rest. So this magnetic force here, it is causing on the rod decrease in kinetic energy. Whereas we have found one case, magnetic force on the moving charge doesn't change the kinetic energy, but this magnetic force is changing the kinetic energy of the rod. ये भी एक good point to introspection में है. आप कैसे इसको जानते हो. And this thing I will explain in subsequent lectures कि why there is a change in kinetic energy of the rod even under the effect of magnetic force, जबकि we say that the force is only on moving electrons and magnetic force on moving charge doesn't change the kinetic energy. Correct? इसको हम लोग देख सकते हैं. Next, once we have this, further the case I will take a rod. A rod is kept on a arrangement where, ऐसे देखिएगा कि ये कोई लैडर अरेंजमेंट है. इफ यू सी लाइक दिस लैडर अरेंजमेंट, और यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ,
this is the ladder arrangement and it is at an angle theta. This ladder arrangement is at an angle theta and this यहाँ पे हमने एक रॉड रख दी है, जस्ट सी थोड़ा मैं टिल्टिंग कर दी, जैसे आपने देखा होगा समवेयर ऑलवेज कि घरों में लोहे की सीढ़ी होती है, तो दैट लोहे की सीढ़ी अरेंजमेंट इट इज एट एन एंगल थीटा टिल्टेड विद ग्राउंड एंड दिस द करंट फ्लो, यहाँ पे एंड पे हमने एक बैटरी लगा दी, some current is flowing in the rod, ठीक है ना, in this loop U shape figure. Now what happened if this current is going to you can see it will form a closed loop. इसका एक closed loop formation यहाँ पे आ रहा है. This rod can have the mass m, length L. This thing can be there. It has the rod has mass m and length L. It can be there. It is at an angle theta and further I will say this mg force is acting downward, vertically downward. What you can see, one component, say this angle is theta. So what you will see, it is 90 minus theta, this is theta, this will be theta. So one component of mg here will be mg sin theta. This will make the rod slide down. This will make the rod slide down for the one component mg sin theta acting on the rod due to gravity. Now, if I say there is some external magnetic field, if I arrange some external magnetic field from the arrangements, say B is like this, some B is present here like this, vertically upward. This B will create some magnetic force also. And see, current flowing is like this, magnetic field is going up. The magnetic force will be inside. The magnetic force on the rod, that will be inside. F magnetic is horizontal. See, this rod is also horizontal. ये सीढ़ी tilted है, ये rod tilted है, but this rod is horizontal. आप जब उसे पैर रखते हो, once you put your feet, you will find it proper this. Now your shoes will be pure horizontal. The current here is horizontal, ideal cross B. Force is also horizontal, F magnetic. So this horizontal force will have some component of the plane, that is F cos theta. F cos theta force will act up. It can balance this mg force. So for rod to be at rest, for this rod to be at rest, what current can flow, that thing I can guess. I will say that F cos theta magnetic force will balance the mg sin theta. They will get. And F will be what? Just see. Current flowing is I. It is B I L. Now magnetic field is this. The B I L cos theta. And that is equal to mg sin theta. Both the forces, they are balancing each other. F cos theta and this. So what could be the current flow here? That thing also I can see. This value will be mg by BL. And this is sin theta by cos theta is tan theta. So this shall be the value of current flow in the circuit. If I am making this current flow in the circuit here, this rod can be balanced and it can slip down with the constant velocity if it is given like that. तो ये एक अच्छा केस आपको यहाँ पे मिलता है कि minimum current flow what it can be so that it is balanced. Yes, it can also happen कि मान लो इसके बाद हमने करंट को बढ़ा दिया from this limiting value, तो this rod can go up also. थोड़ा कम कर दिया तो this rod will slide down also. So this is the optimum value when the net acceleration is 0. F net on the rod is 0. F net is 0 ना. This thing we can see. तो अरेंजमेंट रॉड में फोर्स कैसे आ गया, ये सारा चीज हम लोग देख सकते हैं. इवन द नॉर्मल रिएक्शन एक्टिंग ऑन द रॉड वी कैन सी. तो एक फोर्स का कंपोनेंट बढ़ जाएगा तो नॉर्मल रिएक्शन कंपोनेंट कैन चेंज. ठीक है, ग्रेटर देन mg cos theta will happen because magnetic force component will add up ना. तो वो चीज भी हम लोग देख सकते थे. तो इट्स मोर ऑफ ए 3D फिगर, वी हैव टू ऑलवेज एनालाइज कि 3D फिगर में कैसे फोर्स की बात आती है मैग्नेटिक करंट करिंग वायर पे, ये हम लोग देख सकते हैं. नेक्स्ट, फॉर दिस करंट करिंग लूप और रॉड अरेंजमेंट्स फॉर डिफरेंट केसेस आई हैव डन ना. अब इसमें वन मोर केस आई विल सी. सपोज समवेयर इट इज दिस. ये हमारे पास क्या है, एक हाफ लॉन्ग हॉलो पाइप है. दिस हाफ
long hollow pipe which current density, here see the current is in the hollow pipe. Pipe में ये सारी current is current per unit length is lambda. Lambda is current per unit length in this hollow pipe. It is going inside along the axis. It's an infinite long cylindrical arrangement ना. ये आप मान लेंगे हॉरिजॉन्टल है, पाइप अंदर जा रही है. जैसा आपने देखा होगा कि ना सीवेज वाली जो पाइप्स होती हैं हॉलो लाइक दैट दे आर, और इसमें इनफाइनाइट करंट करिंग वायर्स ऐसे हैं. दिस करंट डेंसिटी इज लैम्डा, इट इज मेंशन्ड करेक्ट. और करंट डेंसिटी लैम्डा यहाँ पे मेंशन्ड है एंड देयर इज अनदर वायर हियर, and it is having the current I2 going outside. और ये मान लो करंट I1 से lambda 1 it is inside. The radius of this pipe, hollow pipe arrangement is R, and I have to see, if the hollow pipe arrangement is R, I have to see the force of interaction per unit length between this wire which is along the axis. This wire is along the axis of this hollow cylindrical pipe and this are the arrangement. तो कैसे हम force को देख सकते हैं? What could be the force? So that force arrangement can be seen. आप थोड़ा ध्यान देंगे, the wires, say this wire here, अगर मैं any small element current element wire को यहाँ पे लेता हूँ, say it is di1 and this is I2, what they will feel? Just see, this wire I2 and I1 both are opposite direction current flow. This current is outside and this current is inside. This current is inside. ये बाहर है. तो दोनों वायर में फोर्स की अगर मैं बात करूंगा तो दिस इज इनसाइड एंड दिस इज आउटसाइड. दोनों का नेट इफेक्ट हम लोग जोड़ सकते हैं. कैसे देखेंगे? तो फोर्स ऑन द करंट कैरिंग वायर्स, अपोजिट डायरेक्शन में करंट कैरिंग वायर्स होंगे दिखेगा. सपोज वन वायर इज दिस, वन वायर इज दिस. इनके केस में जो रिपल्शन फोर्स आएगा, जस्ट सी दिस I1, इट इज I2. इफ आई हैव टू रिलेट तो I1 की जो B1 आएगी यहाँ पे देखेंगे आप, तो B1 इज इनसाइड, B1 इज इनसाइड करेक्ट. I2 क्रॉस B1 से जो फोर्स आएगा इट इज दिस, F2 इज हियर एंड दिस हियर. तो फोर्सेस आर अपोजिट इन डायरेक्शन. अब आप देखें, अगर इस वायर की ये तो हो गया B1 फील्ड, I2 की यहाँ पे मैं अगर B2 फील्ड देखता हूं फॉर I2 वायर, इफ आई गो I2 वायर, जस्ट सी दिस I2 वायर फील्ड विल बी इनसाइड, तो इसकी B2 फील्ड जो होगी ये भी इनसाइड ही जा रही है. अब आप देखिएगा I1 cross B2 it is this. The force are repulsive in nature. Whenever two wires are having current in opposite direction, magnetic force will be repulsive in nature. ये हम लोग देख सकते हैं. तब आप देखिएगा di1 और this, इनमें फोर्स क्या आ गया? repulsive आ गया. This I have told you. Now for this di1 and I2 wire, if I have to see the force df, so this df force will be in this direction. ऐसे आएगा. And I can take the angular position like this, say angle is theta. So df force is in this direction, correct? And di1, I will say what it is this, current per unit length, it is lambda 1, na? And this angular displacement, if this is theta, the extension is, this angle is d theta. Theta and this I1, L1 R d theta, this is di1. So di1 current is this. So correspondingly the df force I will say that mu naught over 2 pi. मैग्नेटिक फील्ड आपका एक का भी देखेंगे, किसी एक की फील्ड, तो वो क्या आ जाएगी? म्यू नॉट बाई 2 पाई, इट इज I1 I2 बाई R ना, ये चीज आ गई. एंड पर यूनिट लेंथ, मान लो इस वायर की जो मैं लेंथ ले रहा हूं, पर यूनिट लेंथ है एनी लेंथ ऑफ द वायर L मान लेता हूं of this arrangement, say L length of wire, I am not taking it infinite, for infinite the force will be infinite, so L length of the wire I2 I am taking, correct? So this is the force di1 I2, and this value if you see di2 अगर मैं करंट लिखूंगा तो this is I2, sorry di1 के लिए मैं क्या लिख रहा हूं? लैम्डा R d थीटा. तो di1 के लिए मैं क्या लिख दिया? देखिएगा lambda 1, तो lambda 1 will be I1 by this length by pi r, so it is I1 by pi r, correct? I1 by pi r, this thing I am taking, into the length will be R d theta. Just see, so this is the force it is happening.
करंट पर यूनिट लेंथ I1 by pi r into r d theta I2 और लेंथ इसकी along the axis L लेंथ आ रहा है। अब आप क्या देखोगे, दिस फोर्स व्हाट इट इज हैपनिंग, इट इज गोइंग आउटवर्ड, इधर रेडियली आउटवर्ड। इफ आई टेक सम एलिमेंट हियर, तो यहां से जो डीएफ फोर्स पाओगे आप, वो इट विल गो लाइक दिस, ये इधर जाएगा। तो व्हाट यू विल फाइंड एज सर, these two forces, one component will add up. Which component will add up? df का, अगर आप देखिएगा दिस एंगल इज थीटा, तो दिस एंगल इज अगेन थीटा, करेक्ट। तो थीटा एंगल पर अगर आप आते हो तो डीएफ का कौन सा कॉम्पोनेंट, साइन थीटा, तो डीएफ साइन थीटा विल एड अप। तो दिस डीएफ में हम कौन सा कॉम्पोनेंट लेंगे आप, साइन थीटा। For this df, if you see this vertically opposite angle, it is theta, तो df sin theta is adding up. इसको आप इंटीग्रेट करेंगे और इधर भी इंटीग्रेट करेंगे, you will get the net value of force, correct? So net value of force due to these arrangements we can see. अब मैं इसको यहाँ पे कैसे लिख पाऊंगा, just see. तो थोड़ा सा इस अरेंजमेंट को I will rearrange, just see. थोड़ा सा हम इसको चेक करेंगे, इस फोर्स की वैल्यू को कैसे I can write, just see. तो देखिए फोर्स की वैल्यू क्या आ गई, दिस फोर्स विल बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में फोर्स की वैल्यू आ जाएगी। व्हाट यू राइट, दिस फोर्स इज, यहाँ पे कंपोनेंट में क्या आ गया आपके पास, साइन थीटा आ गया, यहाँ पे क्या आ गया आपका, साइन थीटा वैल्यू आ गई। जस्ट सी दिस वैल्यू इज म्यू नॉट व 2 पाई, करेक्ट, इनटू I1 I2 इनटू लेंथ L अपॉन, जस्ट सी दिस वैल्यू पाई r स्क्वायर इनटू r, दिस टर्म आई एम गेटिंग, अगेन इट इज साइन थीटा डी थीटा, दिस टर्म वी हैव टू सी। एक बार चेक करिए, सारे रिजल्ट मैंने कैसे लिख दिए यहाँ पे, फॉर द फोर्स ना, तो 2 पाई पाई r स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा, इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, इसको भी क्या करेंगे, इंटीग्रेट, ये तो इंटीग्रेट करके आ गया, दिस वैल्यू इज f, सो दिस वैल्यू फोर्स इज म्यू नॉट और 2 पाई, करेक्ट। अब आप वन थिंग यू कैन सी, वन ऑफ द r is getting cancelled out, I1 by pi r is lambda 1, I1 by pi r is lambda 1, this lambda 1 into I2 length L, integration of sin theta d theta is minus cos theta. I'll put the values of theta from 0 to pi. We will take it from 0 to pi. So this force F, it is mu naught or 2 pi lambda 1 I2 length L. So it is minus cos theta. It is minus sign, and I am putting is cos pi minus cos 0 degree. So this is minus 2 and this is plus 2. So this force value will be mu naught over 2 pi lambda 1 I2 length L, और ये cos pi minus 1 minus 2 with minus sign, it is 2. तो this value of force I can get. तो value of force देखिए आपको ये result मिल रहा है, this is the value of force. Further if I solve, what I will get, थोड़ा और सिंप्लीफाई करूं तो I will get this force, this F will be, this 2 got cancelled, mu naught lambda 1 I2 for length L upon 2 got cancelled by pi. This result we have. The force of interaction between this rod and some wires at the boundary of this annular half cylinder, infinite long. This result we got, correct. ये थोड़ा आप ध्यान देंगे, I1 I2 लेंथ, और दिस फोर्स इज रिपल्सिव। तो अब ये चीज ध्यान देना, दिस फोर्स जो इस रॉड पे लग रहा है उतना ही फोर्स इस पे भी लग रहा होगा, बोथ ऑन, मैंने नेट फोर्स अगर देखिए डाउनवर्ड है तो इस पे भी नेट फोर्स कहाँ लग रहा होगा, अपवर्ड लग रहा होगा। तो दिस फोर्सेस आर एक्शन एंड रिएक्शन, जितना फोर्स उस पे लगेगा उतना ही फोर्स इस पे लगेगा। फॉर द इंटीग्रेशन पार्ट, हाउ यू हैव टेकन दिस अरेंजमेंट, ये भी एक सही सा क्वेश्चन आपका आ गया, कैसे हम रिजल्ट को देख पाते हैं, करेक्ट। तो मैट्रिक फोर्स, सम केसेस ऑफ इंटरेस्ट विद इंटीग्रेशन एंड ऑल दैट आई हैव डिस्कस्ड ना, इसको भी हम लोग यहाँ पर देख सकते थे। व्हाट नेक्स्ट, one more case I will do further, let us see. Suppose I say this wire arrangements, force of interaction
between two infinite long wires, that I will explain. Infinite long wires, this thing I can say. ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर्स कैसे हम लोग देख सकते हैं, जो इस मैंने यहाँ पे डिस्कस किया था. जस्ट टू एक्सप्लेन इट इन डिटेल, दिस आई कैन टेक. दिस आर द टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर्स carrying current I1 and I2. Say separation between them is small d. Separation between them is small d. What could be the force of interaction? तो आप ध्यान दें, if I have to find the force on I2 wire, field must be of B1. I2 वायर में जो फील्ड होगी कौन सी होगी? B1 होगी. B1 field if I find in the surrounding, what is this? So this B1 field is here in the surrounding. Now you see I2 cross B1, the force is inside. This force has tendency in the direction F2. Now if I have to see the force on this current carrying wire I1, the field here will be B2. If I have to get the value of B2 in directions, so just see. For this infinite long wire I2, B2 will be this way. So B2 is this way. ये B2 की वैल्यू ऐसी आ जा रही. B2 is outside. Just see what it will be. Magnetic force I1 cross B2. I1 cross B2. Force is this. So this force is in the direction. See, it is F1. The forces on the two wires, they are opposite in direction. And if I have to write them the value, so suppose I have to write the B2 F2 force. The F2 force is current I1. B1 will be mu naught over 2 pi I1 by D, if the D is the distance between them, and any length of the wire. Suppose I say this length of the wire I am taking is L, I1, and say this, sorry, this current is I2, current is field is I1 into length L. So this is the force on this wire F2 in this direction. The same way, if I have to see the F1 force, it is I1 current, and B2 field will be mu naught over 2 pi I2 by D into length L. And this, both the forces you see, they are towards each other attractive. So this force F1 by length L or F2 by length L, force per unit length, it will be mu naught over 2 pi, it is I1 I2 upon D. This is the value of force per unit length of the wire. And if this arrangement is here, force per unit length of the wire, we can see from here only we get the definition of 1 ampere current. What is that? Definition of 1 ampere current, how we define, उसको भी हम लोग लिख सकते हैं. What we say here, definition of 1 ampere current. So definition of 1 ampere current हम क्या कहते हैं? If the same current is going, I1 is equal to I2, current is same. अगर current की value same है दोनों में, same current is going, and gap D is taken as 1 meter, so that the force per unit length of the wire जो आ गया, अगर वो force per unit length की वैल्यू कितनी आ रही है? 2 into 10 power minus 7 ना, कितनी आ रही है? 2 into 10 power minus 7 न्यूटन पर मीटर वैल्यू आ रही है. बिकॉज वी नो म्यू नॉट बाई 4 पाई, दैट इज 10 पावर माइनस 7. तो बाई 2 पाई जब होगा तो क्या होगा? 2 into 10 power minus 7. इफ द फोर्स इज दिस, per unit length of wire, current same है, distance is 1 meter, so that current must be 1 ampere. तो फर्स्ट per unit length अगर इतना आज वैल्यू आती है 2 into 10 power minus 7 न्यूटन पर मीटर, then both the wire will be flowing the same current of 1 ampere. Correct? तो यहाँ से this is the standard definition of ampere जो हम SI यूनिट्स में अप्लाई करते हैं. एक्सपेरिमेंटली डेफिनेशन में ये रिजल्ट आपका आता है. And these two wires, the current flowing in the same direction, force is attractive. If the two wires current flowing in opposite direction, force will be repulsive. Force attractive भी हो सकता है, force repulsive भी हो सकता है, डिपेंड करेगा डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो. करेक्ट? एक वायर की करंट, दूसरे वायर की फील्ड. दिस थिंग आई हैव एक्सप्लेन्ड. करेक्ट? ये चीज है. नेक्स्ट, ऑन द सेम, वन मोर थिंग आई कैन डिस्कस. द फोर्स बिटवीन टू वायर्स में ही मैग्नेटिक फोर्स से मैं SHM की बात कर दूंगा. F मैग्नेटिक से how we get some condition of SHM, this I can follow.
तो ये भी एक रिजल्ट हम लोग यहाँ पर देखते हैं. What it is, just see. See, it is an infinite long wire carrying current I. Here it is going, and just above it there is a rod, and this rod is carrying current in the opposite direction. If current are in the opposite direction, means they will feel a repulsion. उनके बीच का गैप जो था वो d था. Mass of the rod is m and gap was d. ये इसके vertically up है. They are in the vertical plane. I1 and I2 current they are like this. और इसका जो लेंथ मैं मान लेता हूँ क्या है, ये L है ना. And anyhow what is happening, the mass of rod is such that the magnetic force, see, mg on the rod is acting downward, and there is other force called repulsive force acting up. एक रिपल्शन फोर्स जो मैग्नेटिज्म वाला हो ऊपर लग रहा है. बोथ आर बैलेंसिंग राइट नाउ ईच अदर. अभी इसका मास एंड करंट आर लाइक दैट, दे आर बैलेंसिंग. आई विल से दैट म्यू नॉट और 2 पाई I1 I2 लेंथ L अपॉन D, दिस वैल्यू इज बैलेंसिंग द mg फोर्स. ये चीज आपकी अभी होल्ड कर रही है कि इन बोथ द वायर्स मैग्नेटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स दे आर बैलेंसिंग ईच अदर. तो ये हैंग कर रहा है. दिस रॉड इज हैंगिंग अगेंस्ट द मैग्नेटिक mg फोर्स और दिस मैग्नेटिक फोर्स. ग्रेविटेशनल और mg फोर्स बैलेंस हो रहा है. ये कहीं पे फिक्स रहा होगा. ठीक है, ये चीज हो रही है. नाउ इफ दिस रॉड इज डिप्ड स्लाइटली बाय डिस्टेंस y मच लेस देन d, से इसको नीचे प्रेस कर दिया. जब आप प्रेस करोगे नीचे, व्हाट विल इंक्रीज, d घट जाएगा. तो d जब ये d जब घट जाएगा तो मैग्नेटिक फोर्स विल इंक्रीज, इट विल पुश बैक. तो अगर मैं थोड़ा सा डिप करके इसको छोड़ देता हूं तो दिस रॉड विल हैव टेंडेंसी ऑफ SHM. ये SHM की टेंडेंसी यहाँ पे क्रिएट कर सकता है. दैट वैल्यू वी कैन सी इफ दिस इज प्रेस्ड डाउनवर्ड बाय स्मॉल y एंड रिलीज्ड. तो यहाँ पे हमको इसका SHM वाली बात को प्रूव करना है. तो अब मैं F डैश जो देखूंगा नया मैग्नेटिक फोर्स, that will be what, mu naught by 2 pi I1 I2 length L by D minus y. ये F डैश हो गया. करेक्ट. अब दिस फोर्स इज ग्रेटर देन mg फोर्स. F नेट क्या आ जाएगा, उसको ऊपर ले जाएगा. F नेट विल बी F डैश माइनस mg, दैट इज m इंटू e. और इसको हमको प्रूव करना है कि इट इज द कंडीशन ऑफ SHM. F net is m into a. F dash की वैल्यू देखिए, डाल दीजिए. ये वैल्यू क्या आ गई, इट इज म्यू नॉट ओवर 2 पाई I1 I2 लेंथ L ओवर ना D माइनस y. ये हो गया आपका मैग्नेटिक फोर्स माइनस mg. करेक्ट. दैट वैल्यू इज m into a. वी हैव टू प्रूव दिस कंडीशन इज SHM कि ये SHM यहाँ पे करेगा. व्हाट कैन आई डू. और देखिएगा द रिजल्ट, ये यहाँ पे क्या आ रहा है, ये mg आ रहा है. तो मतलब मैं क्या कह सकता हूं, फॉर दिस अरेंजमेंट mgd, यहां से देखिएगा अगर मैं mgd की बात करूं तो इट इज व्हाट, म्यू नॉट बाई 2 पाई I1 I2 लेंथ L बाई, ये आ जाएगा वैल्यू ना, म्यू नॉट बाई 2 पाई I1 I2 लेंथ L. तो ये मैं mgd लिख सकता हूं. तो ये देखो मैं क्या करूंगा, फर्दर दिस वैल्यू म्यू नॉट बाई 2 पाई I1 I2 L, इसको मैं लिख दिया mgd ओवर d माइनस y माइनस mg. ये हो गया m इंटू ए. ये रिजल्ट आपको आ रहा है. एंड दिस फोर्स इज अपवर्ड, क्योंकि अपवर्ड की तरफ इसकी टेंडेंसी होगी. तो फर्दर व्हाट कैन आई राइट, दिस फोर्स इज mg टाइम्स क्या हो गया, d ओवर d माइनस y. करेक्ट. माइनस 1 ना, ये आ गया आपके पास m इंटू ए. m गॉट कैंसिल्ड. फर्दर व्हाट आई विल गेट, जस्ट सी, इट इज g टाइम्स d माइनस y. तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई देखिए, d माइनस d और माइनस y, तो ये बचेगा y ओवर d माइनस y. करेक्ट. दिस इज a. अब आप देखिए, आई हैव ऑलरेडी गिवन y इज मच लेस देन d. If y is much less than d, I can neglect. What can I say that? G times y by d, and it is a. So this value I can approximate it is this.
तो ये रिजल्ट आपको यहाँ पर मिल रहा है, जस्ट सी, ये रिजल्ट आपको एक्सेलरेशन के लिए मिल रहा है। व्हाट कैन आई से फर्दर, मैं उसको यहाँ पे अगर लिखता हूँ, जस्ट सी एक्सेलरेशन E, इफ आई हैव टू गो, व्हाट कैन आई राइट, दिस एक्सेलरेशन E is equal to, just see what it is, G upon D into Y. Now vectorally if you see, Y I have given it downward and A is upward, both are opposite directions. I'll put this sign, तो मैं ये साइन यहाँ पे डाल सकता हूँ। तो दिस G by D is constant, तो दिस इज इक्वल टू A is equal to minus omega square Y. So omega is under root of G by D. So time period is 2 pi by omega under root D by G. So this is the equation of time period for SHM. How this rod is undergoing SHM for this magnetic force effect, we can see. This is the previous IIT advanced question. कैसे हमने उसको देख लिया कि SHM करेगा magnetic force को बैलेंस करते हुए। तो there are two forces. One is mg, other is magnetic. And in limiting condition, it is going for periodic SHM ना। तो ये बात हमने यहाँ पे इसको चेक कर लिया। तो मैग्नेटिक फोर्सेस दे हैव डिफरेंट सॉर्ट ऑफ इम्पैक्ट्स, और उसका रिजल्ट हम लोग कैसे डिफरेंट कंडीशंस में पा जाते हैं, ये आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो जस्ट सी दिस वैल्यू, हाउ वी हैव डन फॉर द मैग्नेटिक फोर्स फॉर एनी करंट कैरिंग वायर, डिस्प्लेसमेंट का इफेक्ट, मैग्नेटिक फील्ड वेरिएशन, ऑल द केसेस आई हैव डिस्कस। वन मोर केस आई कैन टेक, जस्ट सी, suppose somewhere there is a region of magnetic field going radially outward. Magnetic field is going radially outward in 3D space. 3D space में magnetic field जो है radially outward जा रहा है, 3 dimensional है ये, मान लीजिएगा it is the 3 dimensional space जहाँ पे कि magnetic field ऐसे जा रहा है, correct? Now for this magnetic field what I have, और इसका एक रीजन मान लेते हैं हम लोग, समझ गए, द रीजन इज हियर, और इस मैग्नेटिक फील्ड रीजन में B इज गोइंग, B R इज गोइंग रेडियली आउटवर्ड, आई एम टेकिंग दिस क्वेश्चन रेफरेंस, SC वर्मा में है ये, कि ये रेडियली आउटवर्ड फील्ड जा रही है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, आई हैव पुट अ रिंग, मैंने एक रिंग रख दिया यहाँ पे, जस्ट सी, if this field is going like this ring is here, समझ रहे आप, तो ये रिंग आपको यहाँ पर रख दिया गया, ये रिंग है, इस रिंग पे मैग्नेटिक फोर्स देखना है। एंड सपोज आई सी, ये सेंटर ऑफ द रिंग है, XYZ 3D सिस्टम है, मान लीजिएगा आप यहाँ पे, दिस द एक्स एक्सिस, दिस इज Y एक्सिस एंड दिस Z एक्सिस ऑल्सो। तो 3D अरेंजमेंट में यहाँ पे करंट फ्लोइंग इज I, यह करंट फ्लोइंग इज I, और मैग्नेटिक फील्ड B ऐसे कुछ थी। तो व्हाट इज द फोर्स ऑन दिस अरेंजमेंट, और इसका आप रेडियस मान लेते हैं क्या, दिस इट हैज इट्स ओन रेडियस, सी इट इज R इज द रेडियस ऑफ दिस हॉरिजॉन्टल रिंग केप्ट हियर, समझ गए। आप ऐसे मान सकते हो कि कोई फुटबॉल है, फुटबॉल के ऊपर एक छोटा सा रिंग रख दें ना, एक नॉट इन द इक्वेटोरियल प्लेन, थोड़ा और से ऊपर रख के ना, लैटिट्यूड एंगल से 60 डिग्री पे लाइक दैट, तो एक हमने रिंग रख दिया यहाँ पे। तो यू हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फोर्स हियर। तो व्हाट आई विल डू, से करंट इज फ्लोइंग लाइक दिस वे, ये जो करंट यहाँ पे जा रहा होगा, जस्ट सी, तो दिस करंट व्हाट इज पासिंग हियर, B विल बी गोइंग लाइक दिस। B के दो कंपोनेंट होंगे, वन इज हॉरिजॉन्टल BX, अदर इज BY। These two field components it will have, one is Px, other is By, just see, किसी स्मॉल एलिमेंट पे। अभी जो B की वैल्यू आ रही है, और मैग्नेटिक फील्ड में अगर देखोगे तो देखो यहाँ पे करंट इज गोइंग आइडियल, करंट इधर गया, आइडियल क्रॉस BY, आइडियल क्रॉस BY अगर लिखोगे तो I छोटा लेंथ क्रॉस BY, अगर इसका आप DF फोर्स देखते हो ना, तो दिस विल गिव द DF फोर्स। तो आइडियल क्रॉस BY, इट इज रेडियली आउटवर्ड, दिस विल बी रेडियली आउटवर्ड, ये जो फोर्स होगा ये हॉरिजॉन्टल जाएगा BX पे, तो DF X पे जाएगा, इधर आइडियल क्रॉस BY बाहर जा रहा है,
तो ये थ्रू आउट जो देखो यहाँ पे जो फोर्स आएगा फिर से उसको देखोगे तो वो डी एफ फोर्स इधर जाएगा, तो बी वाई फील्ड का जो फोर्स आ रहा है दैट इज गेटिंग कैंसिल आउट। इसका इंटीग्रेट करोगे, इसका इंटीग्रेट करते हैं तो दिस फोर्स एफ एक्स जो आ जाएगा दिस विल कैंसिल आउट, जीरो हो जाएगा फील्ड। नाउ आई विल सी फॉर द बी एक्स फील्ड जो है तब क्या होगा, आइडियल अंदर गया क्रॉस बी एक्स इट इज डाउनवर्ड, हर जगह पर ऐसे जुड़ता चला जाएगा, इट इज डाउनवर्ड ऐसे जुड़ता चला जाएगा। इफ आई सी द नेक्स्ट दैट इज आई डी एल बी एक्स, अब आप ध्यान दीजिएगा आई डी एल करंट अंदर गई यहाँ पे रिंग पे, क्रॉस बी एक्स इधर फोर्स इज डाउनवर्ड, तो हर जगह पे आप देखोगे दैट फोर्स विल बी डाउनवर्ड, और एक्स एक्सिस इधर जा रहा है, समझ रहे हैं ना, आइडियल क्रॉस बी एक्स फील्ड जब देखोगे आइडियल क्रॉस बी एक्स हर जगह पे डाउनवर्ड फोर्स ही जाएगा, आइडियल क्रॉस बी एक्स एनीवेयर यू विल सी ना। तो आप ध्यान देना एक बी वाई फील्ड है, एक बी एक्स फील्ड है, बी एक्स फील्ड इज दिस रेडियली आउटवर्ड इधर जा रही, तो इसका जो फोर्स आ गया तो मैं देखो दिस फोर्स इज एफ वाई माइनस जे कैप ना, एंड इट विल एड अप, इसको इंडिकेट करो सब फोर्स क्या आएंगे डाउनवर्ड की तरफ जुड़ते जाएंगे, तो दिस फोर्स विल बी एफ वाई फोर्स विल बी आई, लेंथ हो जाएगा आपका 2 पाई आर डी एल का इंटू बी एक्स फील्ड वी कैन सी ना, तो ये बी एक्स फील्ड की वैल्यू आपको यहाँ पर मिलेगी, एंड बी एक्स फील्ड व्हाट यू विल डू, विल गो फॉर इट्स थीटा कॉम्पोनेंट, मतलब ये जो बी था अगर मैं इस प्लेन में जाता हूँ तो आई विल सी दिस एंगल थीटा ना, फॉर थीटा इफेक्ट ये चीज आप पा सकते हो कि रेडियली आउटवर्ड फील्ड है और एक्स एक्सिस पे बी कॉस थीटा से आ जाएगा, करेक्ट। तो फोर्स ऑन दिस अरेंजमेंट और ये आ गया 2 पाई और आर 2 पाई आर, समझ गए, तो फोर्स विल बी दिस, एंड दिस फोर्स एफ वाई जो फोर्स आ गया ये देखिएगा माइनस जे कैप, दिस इज अलोंग माइनस जे कैप, फोर्स इंटू सर्कमफ्रेंस इंटू बी एक्स फील्ड, करेक्ट। तो फील्ड लेंथ से 3D स्पेस में मैग्नेटिक फोर्स का एक अच्छा एक केस बन गया। ऑल द डिफरेंट केसेस आई हैव डन फॉर मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग रॉड, इट वाज सर्कुलर लूप और डिफरेंट केसेस इट इज देयर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट इज योर मैग्नेटिक मोमेंट एंड अदर थिंग्स आई विल डू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।